Hello class 5th students. Today we are going to discuss chapter 8 Sound and Noise. Recognize the sounds that these animals make right in the space given below. So you can write here the sounds of these animals by yourself. Let's know about common sounds around us. What is sound? Sounds may be inanimate objects, sounds made by living things, sounds that are important to us, warning sounds. Types of sounds, noise pollution, its impact and prevention. These are the topics we will discuss in this chapter. The first topic we have common sounds around us. These are various sounds around us. If we remain silent and try to concentrate on the sounds in our immediate environment, we will maybe surprised by the various sounds that we come across. We can hear the sound of moving traffic, sound of the clock ticking, sound of the ceiling fan, sound of the tap running, laughing sound, coughing sound, sound of the TV and that of the mobile phone and many other. We hear these sounds from the time we wake up in the morning till the time we go to the bed at night. So these are the different type of sounds we hear. Every day we hear these type of sounds like sound of a traffic, clock ticking and everything. So these are the different type of sounds. Look here are some pictures. Ceiling fan, TV, clock, a boy is laughing. So these are the different sounds we listen every day. Now, what is sound? Sound is a form of energy. It is caused by vibration and travels through matter, solid, liquid or gas until it reaches the ear of the listener and can be heard. A sound is produced by some mechanical movement like plucking the strings of a guitar. This creates a vibration which is then transferred through the air molecules. This transfer creates a vibration. Transfer from molecule to molecule causes sound to travel. Some sounds are pleasant and desirable, such as speech and music, while others are unwanted and annoying, such as loudspeakers and roadside noise. स्टूडेंट्स नॉइज क्या होता है? मेनली आपकी वाइब्रेशन जो है वो ट्रांसफर होती है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल और आपकी साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की नीड होती है. वो आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी हो सकता है. और जो आपकी साउंड्स है मेनली वो कहाँ से क्रिएट होती है? वो वाइब्रेशन से क्रिएट होती है. आप जो साउंड सुनते हैं वो अच्छी हो सकती है लाइक स्पीच एंड म्यूजिक. कुछ ऐसी होती हैं जो आपको अनोय करती हैं लाइक लाउड स्पीकर्स एंड रोड साइड नॉइज. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नॉइज. Do you know? Since particles are closer together in water than air, sound can travel 4 times faster in water. Sound cannot travel through space because there are not any molecules to vibrate in space since it is a vacuum. The loud noise you create by cracking a whip occurs because the tip is moving so fast that it breaks the speed of sound. तो स्टूडेंट आपकी जो साउंड है वो कभी भी स्पेस में ट्रेवल नहीं करती है. क्यों नहीं करती है? क्योंकि वहां पर पार्टिकल्स नहीं है, वो वाइब्रेट नहीं करते हैं. सेकेंड थिंग, आपकी जो साउंड है वो वाटर में 4 टाइम्स फास्टर ट्रेवल करती है इन कंपैरिजन ऑफ एयर. और जो आपकी लाउड नॉइज होती है जब आप किसी विप को क्रैक करते हैं तो वो क्यों इतनी लाउड होती है? क्योंकि वो साउंड की स्पीड को ब्रेक कर देती है. नाउ वी हैव sound made by inanimate objects. We have noticed that apart from living objects, many non-living or inanimate objects also produce a variety of sounds. The variety of sounds produced by these objects are the buzzing of the telephone, ringing of bells, honking of horns, rustling of leaves, zooming of aeroplanes, to name a few. So these are the sounds जो आपको आपके आसपास मिल जाएंगी जिनमें आपके लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स सब क्या है? ये वो साउंड्स है बच्चे जो आपके लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस करते हैं. जैसे फोन जो बजता है आपका, बेल का बजना, एरोप्लेन का जाना या हॉर्न बजना. दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स. लुक हियर सम पिक्चर्स. टेलीफोन, बेल, हॉर्न, aeroplane. Do you know the scientific study of sound waves is known as acoustics. The sound of thunder is produced by rapidly heated air surrounding lightning which expands faster than the speed of sound.
सो स्टूडेंट, जो आपकी थंडर की जो आपको आवाज आती है वो बहुत रैपिडली हीटेड एयर में सराउंड। द लाउडेस्ट नेचुरल साउंड ऑन अर्थ इज कोज्ड बाय एन इरप्टिंग वोल्केनो। सो आपकी अर्थ पे सबसे ज्यादा लाउडेस्ट नेचुरल साउंड कब होती है? जब कोई वोल्केनो जो है इरप्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ साउंड मेड बाय लिविंग थिंग्स। Living things make numerous sounds for various reasons, either to communicate, to express their joys and sorrows, to express hunger, to call out to their parents, etc. Human beings are also capable of producing various sounds like stomping of feet, clapping of hands, snapping of our fingers, whistling, singing, shouting, sneezing, coughing, etc. So these are the different type of sound human beings can produce. The sounds made by animals are not as structured as human beings and also lacks creativity and flexibility. However, they have very specific ways of communication indicating hunger, warning of coming a danger, etc. Some male animals and birds produce special sounds to attract the females. We can easily recognize a particular animal with two distinct cries. For example, the mew of a cat, screeching of a bat, howling of a wolf, bellow of an oxen, roar of a lion, chirping of crickets, etc. So students, जैसे ह्यूमन बींग्स डिफरेंट टाइप की साउंड्स जो है प्रोड्यूस करते हैं, हम किस लिए प्रोड्यूस करते हैं? कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए। वैसे हमारे एनिमल्स भी डिफरेंट टाइप की आवाज निकालते हैं। जैसे जब वो किसी खतरे में होते हैं या वो कोई स्पेशल टाइप की साउंड प्रोड्यूस करते हैं अपनी फीमेल पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, और या जब वो भूखे होते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और हम एनिमल्स को उनकी आवाज से क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं, ठीक है। और आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स गिवन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स के। लुक हियर सम पिक्चर्स, कैट, वॉल्फ, ऑक्शन, लायन। डू यू नो flies are not able to hear any sound at all. Dolphins are capable of hearing sounds underwater from as far as 15 miles away. Whale's voice can travel 479 miles through the water of the ocean, thus they have the ability to communicate from long distance. So students, ये different चीजें हैं जो आपको शायद पहले नहीं पता होंगी। जैसे आपकी फ्लाइज को कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती है, और डॉल्फिन जो है वो अंडर वाटर 15 माइल्स तक कोई भी आवाज सुन सकती है, और वेल जो है, वेल की जो वॉइस है वो 479 माइल्स वाटर ऑफ ओशन में सुन सकती है वो एक दूसरे को। सो वो एबिलिटी है उनकी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन की। हियर इज साउंड्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू अस। वार्निंग साउंड्स। Warning sounds have the ability to produce noises which allow us to instantly respond to a warning or alarm with our sense of hearing. These can sometimes be more effective than visual warning signals. They alert us to either get out or stay away from different situations that may risk our lives. Some of the warning signs are as follows. So students, warning sounds या फिर जो sounds हमारे लिए important होती है वो क्यों? जब भी आप किसी वार्निंग साउंड की बात करेंगे तो आपको कोई अलार्म दे रही है, वो आप सुन सकते हो, तो उसके थ्रू आप अपने एक्शंस को चेंज कर सकते हो। तो वार्निंग साउंड मेनली करते क्या है कि हमें वार्न करती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। और अब हम कुछ वार्निंग साउंड्स के बारे में रीड करेंगे। लुक हियर, हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स। Horns are commonly used in vehicles which allow the driver to warn unsuspected motorist or pedestrian and help to avoid accident. So आपकी vehicles में जो horn होता है वो किस लिए होता है? किसी भी accident को avoid करने के लिए। Alarms. Alarms are mostly found in industries or noisy areas to alert individual if attention is required. So हमें अलार्म कहाँ मिलेंगे बच्चा? इंडस्ट्रीज में मिलेंगे या किसी नोइजी एरिया में, और वो हम यूज किस लिए करते हैं? किसी इंडिविजुअल को अलर्ट करने के लिए। Sirens. Sirens produce a very loud sound and are commonly used as an alarm or warning for an incoming storm, tsunami or any natural phenomenon in location. So बच्चे, आपके साइरेंस यूज होते हैं किसी भी अपकमिंग सिचुएशन के लिए अलार्म देते हैं, जैसे स्टॉर्म है, सुनामी है, या कोई और नेचुरल फिनोमेना। ओके स्टूडेंट, साइरेंस मे आल्सो बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, और साइरन कुछ और टाइप्स के भी होते हैं, लाइक साइरन ऑफ द एम्बुलेंस. This kind of siren is used when the ambulance is on its way
to pick a patient or to drop the patient at the hospital. In either case, the purpose of the siren is to clear the road of all vehicles so that medical help can be made available to the patient at the earliest. तो स्टूडेंट, आप सबको पता होगा कि एम्बुलेंस का सायरन कैसा होता है। वो किस लिए होता है कि जब भी आपकी एम्बुलेंस या तो किसी पेशेंट को लेने जाती है या किसी पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाने जा रही होती है, तब वो अपने सायरन का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि रोड को क्लियर कर दिया जाए और पेशेंट को जल्दी से जल्दी मेडिकल हेल्प अवेलेबल की जा सके। नाउ, सायरन ऑफ द पुलिस व्हीकल, इट्स एम इज ऑल्सो टू क्लियर द रोड ऑफ अदर व्हीकल so that police can reach the public at the earliest. Okay students, now we have siren of the fire engine. The purpose of using a siren by a fire engine is to reach its destination at the earliest to extinguish a fire. So बच्चे, फायर इंजन में सायरन यूज क्यों किया जाता है? वही कि रोड क्लियर हो जाए, वो जल्दी से जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। Look here some pictures. Police van, ambulance, fire engine. Do you know? The energy in a sound wave can be measured using decibel, dB. The decibel meter shows examples of things that make a noise and measurement in decibels. Amplitude measures how forceful the wave is. It is measured in decibels or dB of sound pressure. So mainly हम जो अपनी sound है उसको measure किस में करते हैं students? Decibel. Now we have types of sound. As we have stated so far, sound is a form of energy which is created when something vibrates and in turn causes the medium around it. Example, air, water, etc. To vibrate. The sound thus produced may either be of pleasant or unpleasant nature. So student, जब भी हम sound की बात करते हैं तो हमें पता है sound क्या है, एक form of energy है। उसमें जब कोई चीज vibrate करती है वो हमारे medium हो सकते हैं, air और water, etc. जो आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है वो अच्छी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है जो आपको पसंद ना आए। नाउ रीड अबाउट इट। प्लीजेंट साउंड्स। व्हेन वी लिसन टू सॉफ्ट म्यूजिक, it has a capacity to make us feel relaxed and happy. These sounds are periodic and regular and are pleasing to our ears and minds. Following are a few examples of pleasant sounds. The sound made by waves of the ocean, sounds of musical instruments, sounds of bird chirping or call of a cuckoo, sound of water droplets, sound of the gentle breeze. तो बच्चे, प्लीजेंट साउंड्स वो होती हैं जो आपके माइंड को रिलैक्स करती हैं, आप अच्छा फील करते हैं। जैसे आप कोई सॉफ्ट म्यूजिक सुनते हैं, वो एक रेगुलर होती हैं, वो पीरियोडिक होती है, एक टाइम पे ही होती हैं। तो और आपको ये कुछ एग्जांपल्स गिवन है आपकी बुक में प्लीजेंट साउंड्स। नाउ वी हैव अनप्लीजेंट साउंड्स. These sounds make us feel irritated, uncomfortable, and even have the ability to make us feel unwell. These sounds are non-periodic and irregular. Unpleasant sounds are also called noise. Following are the examples of unpleasant sounds: honking of horns, sound of drilling machine, sound of an explosion, noise from factories or a construction site, sound made by an aircraft while taking off or landing. So students, unpleasant sound वो होती है जिससे आप irritated या uncomfortable feel करते हैं. That is unpleasant sound. Now we have check and mate. You can do it by yourself as you have already studied about these things. Now we have noise. A sound that is loud, unpleasant or frightening and that can cause physical, mental or emotional disturbance is called noise. So student, वो साउंड जो लाउड हो, अनप्लीजेंट हो और फिजिकल या मेंटल या इमोशनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, दैट इज नॉइज. Very long exposure to loud noise can be harmful and can damage our hearing power. Do you know? A human being ear hears an audible sound wave if their frequency range from 20 to 20,000 vibrations per second. Subsonic has a frequency that is less than the audible sound waves. Ultrasonic have a frequency higher than the audible sound waves. Animals like dogs have a sense of higher frequency of hearing sounds. This allows them to hear sounds that human can't. It also makes animal able to sense out oncoming danger. Therefore, sound serves as a warming and prepares the animals for defense and attacks.
सो स्टूडेंट, जो ह्यूमन ईयर की रेंज होती है किसी भी ऑडिबल साउंड के लिए, दैट इज 20 to 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। और ये जो चीज है ये आप इससे ना इससे कम वाली आप सुन सकते हो, ना इससे ज्यादा वाली आप कोई भी फ्रीक्वेंसी रेंज में अगर साउंड है तो नहीं सुन पाओगे। सब सोनिक साउंड्स की जो रेंज है वो इससे कम होती है और अल्ट्रासोनिक साउंड्स की रेंज जो है वो उससे ज्यादा होती है। लेकिन कुछ एनिमल्स जैसे डॉग, वो क्या करते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी की आवाज को सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो उन्हें आने वाले डेंजर का पता पहले चल जाता है, इसलिए वो खुद ही डिफेंस और अटैक के लिए रेडी हो जाते हैं। नाउ नॉइज पोल्यूशन, इट्स इम्पैक्ट एंड प्रिवेंशन। Continuous exposure to excessive noise is called noise pollution. Various causes can be associated with high levels of noise pollution in today's world. Some of them are industrialization, construction activities, vehicles on road, noise of aircraft for people living near airports, social events, household appliances, etc. So ये आपकी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है, क्योंकि उनका जो नॉइज है वो बहुत हाई होता है। Noise pollution can have adverse effects in our life, especially the elderly and sick people, along the children and animals. Some of the adverse effects of noise pollution are. So student, noise pollution का बहुत बुरा इफेक्ट हम लोगों पे होता है, जैसे कुछ बूढ़े लोग या बीमार या बच्चे और जानवरों पर बहुत ज्यादा जो है आपका अफेक्ट देखा जा सकता है नॉइज पोल्यूशन का। Here is headaches, earaches, dizziness, health issues such as stress, fatigue, hypertension, sleep disturbance, loss of hearing. So these are the adverse effects of noise pollution. Noise pollution also has adverse effect on wildlife, as animals have better sense of hearing than humans. Pets react more aggressively to loud noise produced at home. They become disoriented and behave abnormally. Excessive noise pollution may cause loss of hearing in animals too. तो स्टूडेंट, आप सबको पता है कि एनिमल्स की जो हियरिंग पावर है वो ह्यूमन से बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो जब कोई लाउड नॉइज या नॉइज पोल्यूशन होता है वो ज्यादा एबनॉर्मल बिहेव करते हैं। आप अपने घर में पेट्स को देख सकते हैं, जब आप बहुत लाउड नॉइज आपके घर में होता है तो क्या होता है, वो एबनॉर्मली बिहेव करते हैं। और एक्सेसिव नॉइज पोल्यूशन से एनिमल्स की हियरिंग पावर भी खत्म हो सकती है। नाउ प्रिवेंटिंग नॉइज पोल्यूशन। There are various practical ways to reduce noise pollution. Some of them are: unnecessary honking by vehicles should be controlled, especially near hospitals, schools, and residential areas. Planting trees in our neighborhood is another way to control noise pollution, as trees absorb a lot of noise. Use of earplugs is cost-effective a way to protect ourselves from noise pollution. Loudspeakers, loud volume of television, etc. should be avoided. So student, ये कुछ चीजें हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में फॉलो कर सकते हैं या अपने पेरेंट्स को बोल के करवा सकते हैं। जैसे हमें बहुत ज्यादा हॉन्किंग ऑफ हॉर्न्स इन रेजिडेंटल एरिया, नियर द स्कूल, नियर द हॉस्पिटल नहीं करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाने चाहिए, क्योंकि आपके ट्रीज बहुत सारी नॉइज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपको ईयर प्लग्स लगा लेने चाहिए खुद को नॉइज पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। लाउड स्पीकर्स और टीवी की वॉल्यूम को आपको अपने घरों में तो एटलीस्ट कम करना चाहिए। Now we have an activity to make a cardboard guitar. Things needed: thick cardboard shoebox, 4 rubber bands of different width, wooden scale, pencil, knife, a cold drink can, glue. So these are the things you need. Now we have procedure. Press a circle at the middle of the shoebox. Trace a circle at the middle of the shoebox. Lid with the help of the cold drink can carefully cut out the circle. Arrange the rubber bands around the shoebox in order from thickest to the thinnest, so that they are positioned above the hole in the lid. Cut 6 evenly spaced notches across one side of pencil using an art knife. Each notch should be just wide enough to fit a rubber band. Make sure not to make the notches further apart than the width of the hole in the box lid. Slide the pencil under the rubber band on one end of the shoebox. Fit one rubber band into each notch. The pencil will elevate the strings and hold them in place, acting as a guitar bridge. Glue the ruler lengthwise on the back of the shoebox, the side without the lid. Allow the ruler to hang off the sides of the shoebox, acting as the neck, and
fretboard of the guitar. Decorate the guitar using your own imagination. So that's how you can make a guitar with the help of these things. You can perform this activity in the presence of your teacher. Here, what we learn in this chapter, now we will discuss it in a nutshell. Sound is a form of energy caused by vibrations and travels through matter. Sounds may be created by inanimate objects or by living things. Some sounds are very important to us. They act as warning signs against various dangers. Sounds may be either pleasant or unpleasant to our ears. A sound that is loud, unpleasant or frightening that can cause physical, mental or emotional disturbance is called a noise. Continuous exposure to excessive noise is called noise pollution. Noise pollution may have adverse effects on our lives and hence should be prevented. Here is keywords. Pedestrians, people on foot, decibel dB, unit for measuring sound. Amplitude, the measurement of the maximum extent of a vibration. Disoriented, confused state of mind. Thank you students. We will meet again in the next chapter.